Now shifting our focus to some other stories that we are tracking is where massive protests erupt in West Bengal as hundreds of unemployed teachers took to the streets under the banner of Jogyo Shikshak Shikshika Adhikar Manch. Scores of terminated teachers launched their Nabanno Obhiyan, a protest march towards the state secretariat in Howrah. The protesters, who were once part of the School Service Commission's 2016 recruitment drive, are seeking reinstatement. The Supreme Court had earlier upheld a Calcutta High Court order scrapping the appointments of over 25,000 teaching and non-teaching staff, calling the recruitment process vitiated and tainted. Following this, many eligible teachers, now jobless, allege they were wrongfully punished for the corruption carried out by officials during the recruitment process. They blame the state SSC's failure to distinguish between fraudulent candidates and genuinely qualified ones. Heavy police deployment was seen around Nabanno to prevent any law and order situation. Authorities remain on an alert as protesters demand immediate action from the government. The agitating forum has put forth 3 key demands. First, publication of a list of untainted certified teachers, release of OMR sheets used in the selection process, and reinstatement of all eligible candidates. हम लोग अनटेंटेड टीचर्स है और हमने ऐसा कोई दोष नहीं किया है, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने किसी को पैसा नहीं दिया। हम अपने जो हार्ड वर्क था, अपने जो डिलीजेंस था, उसके बलबूते पे ये नौकरी मिला था हमें, और उसके बलबूते में ही आज रोड पे भी आ गए, क्योंकि किसी नेता के घर में पैसा नहीं भेजा, किसी पार्टी फंड में पैसा नहीं भेजा, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपने पढ़ाई में थी। दूसरे चारों तरफ क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि अगर उस तरफ ध्यान देते तो शायद सरकार भी यही चाहती है कि जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी शिक्षा ले रहा है, उनके लिए शिक्षा कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप पैसा दो और सीट ले सकते हो आप।